Very good morning, 10th class. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home and going through your lessons every day. So, taking forward a history lesson, nationalism in Europe. Just a small recap what we have studied during our last class. We have understood about the conservative regimes that were set up after the defeat of Napoleon in 1815. Those conservative regimes were conservative, they could not tolerate dissent or criticism against them, and they also imposed censorship. Then after, we have studied about the revolutionaries, the like-minded men who became the part of secret societies, specially set up by the biggest revolutionary of Europe, that is Mazzini. He had set up two secret societies, Young Italy and Young Europe. And young men from all over the Europe became its members because they wanted to end monarchy and bring democracy or republic and wanted to get freedom from those empires. So that was a small recap what we have studied during the last class. Now starting with our third unit of the lesson, that is the age of revolutions. So when Mazzini inspired people, especially young people, educated classes of course, to bring change in the society, to end monarchy in different countries, revolutions started. So and time period given is 1830 to 1848. This was the time when the people of various countries, they started their freedom struggles to become independent as nation states. So let's see about this period 1830 to 1848. Okay. So first about the conservative regimes that were set up in 1815. As conservative regimes tried to consolidate their power. Consolidate means make strong. वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने कंट्री में. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, another big empire. One we have read about Habsburg, this was another big empire, Ireland and Poland. So what is happening now? After 1815, एक तरफ तो monarchs हैं who are trying to consolidate their position, अपनी position strong कर रहे हैं, and on the other hand, many revolutions started in these areas, especially Italian and German states. Remember हमने starting में पढ़ा था there was no Germany as a country up till now. Only German speaking areas which were under various empires. Habsburg empire के अंडर में भी थे, Ottoman empire के अंडर में भी थे, Ireland, Poland, ये वो सारे areas हैं which are part of big empires. And now the people who are living in these areas, they wanted to get freedom and make their own nation states. These revolutions were led by the liberal nationalists. Those people, Democrats, who have full faith in democracy, belonging to the educated middle class elite. Educated class, middle class, those businessmen, commercial classes. So these are the people who wanted to get freedom, among whom were professors, teachers, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. So these are the people who started freedom movements, struggle, fight for liberalism, fight for nationalism in their areas. अभी हम ये नहीं कहेंगे countries, क्योंकि अभी countries नहीं बने हैं. In their respective areas जो कि अलग अलग empires के अंडर में हैं. So the 1815 से 1830 तक ये सब चलता रहा. And the first upheaval, पहला change, took place in France in July 1813. Again which country? Change फिर कहाँ से शुरू हुआ?
फ्रांस से। 15 years तक पीपल बर्बन, इमेजिन, रिमेंबर बर्बन डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर फ्रांस आफ्टर 1815 टिल 1830 दे रूल्ड, और फिर पहला चेंज आया इन जुलाई 1830। द बर्बन किंग्स, यही डायनेस्टी रूल कर रही थी। The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberals. उन्हें फिर एक रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, इट्स नोन एज 1830 रेवोल्यूशन, और उस बर्बन डायनेस्टी को फिर हटा दिया लिबरल्स ने। लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड, और अब फ्रांस में इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की अगेन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई? अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy. Parliament rules the country, but the head of the country is monarch. राजा है, उसकी position है, king is there in the country, but all the administration is carried out by the elected representatives in parliament. That is constitutional monarchy. तो फ्रांस में instead of monarchy came constitutional monarchy. और who became the king? राजा किसको बनाया गया? लुई फिलिप। किसको बनाया गया? लुई फिलिप एज इट्स हेड. सो ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. इफ यू वॉन्ट यू कैन अंडरलाइन द नेम. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सेड बाय मेटरनिक. कौन है मेटरनिक? ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया. ही सेड, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिटन इन हिस्ट्री सेड बाय मेटरनिक. व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. Every first change starts from France, और फिर उसका असर कहाँ होता है? बाकी के यूरोप में. 1789 द रेवोल्यूशन टुक इन फ्रांस, फिर दूसरी जगह चेंजेस स्टार्ट हुए. अगेन इन 1830 फर्स्ट अनदर रेवोल्यूशन वी कैन से टुक इन फ्रांस. चेंज सबसे पहले कहाँ आया? फ्रांस में, और फिर बाकी के यूरोप पे उसका असर हुआ. सो दिस वॉज द जुलाई रेवोल्यूशन. स्पार्क्ड एन अपराइजिंग, एक विद्रोह शुरू हुआ इन ब्रुसेल्स. अगेन गोइंग बैक टू ट्रीटी ऑफ वियना. ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ, बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए, 10th में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर इन सिविक्स. ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. और इस लेसन में हमने पढ़ा था फ्रांस के चारों तरफ जब स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनाए गए तो बेल्जियम को किसके साथ मिलाया गया था? नीदरलैंड्स के साथ. तो ब्रुसेल्स में एक अपराइजिंग, एक विद्रोह शुरू हुआ टू सेपरेट फ्रॉम नीदरलैंड्स, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स. तो ये पहला एक कंट्री बेल्जियम फ्री हुआ फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. तो पहले फ्रांस में चेंज आया, देन इन ब्रुसेल्स, और वी कैन से बेल्जियम, एंड बेल्जियम सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड्स. तो ये दूसरा चेंज था. तो दो तो हो गए देखो रेवोल्यूशन. फर्स्ट इन जुलाई 1830 इन फ्रांस, एंड द सेकेंड वन एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, और इसका एज अ रिजल्ट द बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. देन अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट जो हम पढ़ेंगे, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कई बार, इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस. दिस इज ग्रीक रेवोल्यूशन. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. है ना, यहाँ पर कैसे स्टार्ट हुआ? Let's see. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. I told you just now in the beginning that Ottoman Empire was another very big empire in Europe, like Habsburg Empire. Ottoman Empire भी बहुत बड़ी empire थी, जिसका हेड था टर्की. एक मुस्लिम कंट्री है टर्की, वहाँ के जो राजा होते थे, ही वॉज द रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर. एंड ग्रीस, अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है पहले, समझा है, तो यूरोप का एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज ग्रीक सिविलाइजेशन, है ना, वहीं से ओलंपिक स्टार्ट हुए थे. तो ग्रीक सिविलाइजेशन इज़ वेरी एंशियंट, और अपने आप में एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज लेकर है ये सिविलाइजेशन. बट ड्यूरिंग 15th सेंचुरी ओटोमन एम्पायर या टर्किश एम्पायर ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया, उसे अपनी कॉलोनी बनाया. सेम लाइक इंडिया वॉज मेड अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, वैसे ही ग्रीस पर कब्जा हुआ ओटोमन एम्पायर का.
in the 15th century. The growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ फ्रीडम मूवमेंट ग्रीस में? इन 1821, क्योंकि धीरे धीरे यूरोप में रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे और उसकी वजह से ग्रीस में स्टार्ट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल इन 1821. Nationalists in Greece got support from the other Greeks living in exile. पहले भी ग्रीक्स कोशिश कर चुके थे फ्रीडम की और बहुत सारे ग्रीक्स को कंट्री से निकाल दिया गया था. Now they also started helping their countrymen and also from many West Europeans, other Christian countries, especially West European countries who had sympathies for ancient Greek culture. Like इंडिया को ईस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन माना जाता है इंडस वैली के टाइम से. इन द सेम वे यूरोप का सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है ग्रीक सिविलाइजेशन. तो बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज दे बिलीव्ड ग्रीस एज द मदर कंट्री या मदर सिविलाइजेशन, एंड बीइंग क्रिश्चियन कंट्रीज दे कुड नॉट टॉलरेट that Greece be a part of Ottoman or Muslim Empire. So many countries started helping Greece to get its independence. Poets and artists praised, what is the meaning of lauded? Praised Greece as the cradle of European civilization. Cradle पता है क्या है बच्चों? पालना, जिसमें बच्चे झूलते हैं, छोटे बच्चे. So Greece or Greek civilization is considered as the cradle of European civilization. वहाँ से निकले सारे, and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. So most of the West European countries, which were Christian countries, they wanted Greece to become free from a Muslim empire. The English poet, very popular poet, जैसे शेक्सपियर है, आपने पढ़ी होंगी पोएम्स शेक्सपियर की, sonnets. In the same way, very popular poet, English poet, Lord Byron, he organized funds. See, the artists, the poets, the writers, they were so much inspired that they also want to get part of this freedom struggle. And Lord Byron, he went to fight in the war. वो तो बकायदा लड़ाई में लड़ने के लिए भी गए, where he died of fever in 1824. But unfortunately, he died there of fever. उस समय तो क्योंकि medicines, health था नहीं, developed facilities, so there while fighting he died. But see, a poet was also ready to fight, और English poet है ये तो, he was ready to fight for Greek independence. Finally, the Treaty of Constantinople. Will you pronounce this word with me? Treaty of Constantinople of 1832. 1821 में ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ एंड वेंट ऑन टिल 1832. recognized Greece as an independent nation. और 1832 में जाकर ग्रीस was declared as an independent nation state. अभी हम कंट्री नहीं बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? नेशन स्टेट. So this was one of the earliest countries. Greece was one of the earliest countries to become a nation state. So this is full Greek War of Independence. Now this is the beginning of becoming of nation states. अब धीरे धीरे कंट्रीज फ्री होने लगेंगे. वो एम्पायर सिस्टम ब्रेकअप होगा. एम्पायर्स में क्या कर रखा है मोनार्क्स ने? बहुत सारी अलग अलग एरियाज को अपने अंडर में ले रखा है. नाउ द पीपल ऑफ दोज एरियाज दे विल फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस. अब वो अपनी लड़ाई शुरू करेंगे, नेशन स्टेट्स बनने शुरू होंगे. ऑलरेडी रेवोल्यूशन इन फ्रांस हैड बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. बेल्जियम ब्रोक अप फ्रॉम नीदरलैंड्स, एक इंडिपेंडेंट, अभी क्या बोलेंगे? नेशन स्टेट. बेल्जियम बन गया है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट country that became nation state breaking away from Ottoman Empire, that was Greece. So we have read about the Greek War of Independence. So this is the age of revolutions 1830 से लेकर 1848. अभी हम और आगे पढ़ेंगे about other countries also, but this is the beginning of making of nation states in Europe. So today's lesson
है ना. We'll take a break here and we'll start with the romantic imagination and national feeling tomorrow. Go through this lesson जो आज हमने समझा है. It's not very difficult. एक बार पढ़ोगे, समझोगे, समझ में आ जाएगा. ठीक है. And we'll start the next topic tomorrow. Till then, keep reading.